is very important as a part of the interview session. Okay, Azal is very, very important. Right. So we started need of the SCM, software configuration management is required. Okay. Then software quality assurance and control. Okay. So let us we have to start from here. Software quality assurance. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बार मुझे एक्सप्लेन करना ना, इससे कल मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, बहुत फास्ट हुआ कल. Okay. So इतना जरूरी नहीं है. It's not necessary. It's just a process. हम्म. Software engineering, it's just a process of software development, maintenance, deployment. Okay. So the software engineering that covers time, budget, quality, reusability. Okay. Once you are going to develop that one, that should be the module. It will be the reusable for the next time. Okay. So just we are going to add some new feature, whatever you have developed. So we have that application, existing application. You have to add some new feature that one. This is the concept of reusability. Okay, the inheritance concept is used. Okay, so this is what software engineering. So reusability is more important in the software engineering. So that product will be increased, development time is reduced, because the same thing are developing by the all this developer, it will take the more time. So that the project manager will develop that one single module so that it can be imported the other developers. Okay, so the time is get reduced for the development. So this is the use of the reusability. Testing time also is reduced, or all the project delivery time is also reduced. Okay, budget is also the same because of the reusability. This is most important of the reusability. ओके, सब लोग एक ही आइटम पे वर्क करना, एक ही टास्क पे वर्क करना, उसके लिए टाइम चला जाता है. इसकी वजह से क्या करता है, जो सबको ज़रूरत है वो पूरे प्रोजेक्ट में ज़रूरत है, आगे गिरने वाली है वही चीज़. सो प्रोजेक्ट ओनर, प्रोजेक्ट मैनेजर वो टास्क लिख देगा, कोड लिख देगा, और वही उसको डायरेक्टली सिंपली एज अ फंक्शन करके, एज अ मॉड्यूल करके उसको इंपोर्ट करेंगे, सब डेवलपर उसको यूज़ करेंगे. इससे क्या होता है कि वही टास्क रिपीट करने की ज़रूरत नहीं. दिस इज रीयूजेबिलिटी. Okay, we can reuse that process, we can reuse that module code also. Okay, so here the software process sequentially steps are performed. Okay, what the task we are going to do. This is software engineering is the process how to we are going to develop the software which follows the SDLC models according to the time, cost, and everything. Okay, so the set of activities, method, transformation practices that people use to develop and maintain the system. It's a process of maintaining and development. Benefits, that is quality focus on the quality, consistency. Okay, traceability, early defect removal, reduce the rework and rejection, control of the cost, on time delivery. ट्रेजेबिलिटी मीन्स. क्या? ट्रेजेबिलिटी मीन्स. ट्रेसेबिलिटी, ट्रेजेबिलिटी. ट्रेस करना प्रोडक्ट कितना हुआ, कितना बना है, कैसा है. टेस्टिंग में कर रहे तो हम डिफेक्ट ट्रेस करते हैं, कितना डिफेक्ट असाइन हुआ कि नहीं, डेवलपर ने एक्सेप्ट किया कि नहीं डिफेक्ट, डेवलपर में उसमें कितना वर्क किया, और उसने रिजॉल्व फिक्स किया कि नहीं. तो ये जो प्रोसेस है उसको हम स्टेटस देख रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रेस. ट्रेस. ओके, स्टेटस मतलब ट्रेसेबिलिटी. वी आर गोइंग टू ट्रेस द एप्लीकेशन. मतलब स्टेटस चेक करना ना. यस, कितना हुआ है, कितना बाकी है, इजीली वी कैन ट्रैक. ओके, दैट इज ट्रेसेबिलिटी. देन अर्ली डिफेक्ट रिमूवल, राइट, रिड्यूस रीवर्क एंड रिजेक्शंस. तो ये सब वर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पार्ट है. सी दिस इज द प्रोसेस. ओके, ओनली द प्रोसेस. No one will ask in the interview, just we have to know this one. Okay, some disadvantage with the processes if company is not allow following the properly. अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक स्ट्रीम है क्या नहीं. एस डी एल से क्या है, मॉडल्स है, उसके बेस से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं. वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉलो करनी पड़ती है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस, है ना. तो ये प्रोसेस से परफेक्टली जाओ, उसको आइडेंटिफाई करो, टाइम, बजट क्या है, सब कुछ क्या है,
फिर उसके बाद एसडीएलसी मॉडल अप्लाई करो, फिर उस पर करो। और ये सब प्रोसेस को बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इट्स अ ब्रांच। मतलब हम बोले ही तो साइंस इज द ब्रांच ना, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, लाइक दिस वे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द branch, then SDLC, then developing the application. So that is follows the software engineering. It's a process. सो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रॉपरली फॉलो नहीं किए हमने तो क्या हो सकता है, कमिटमेंट्स कंसिस्टेंटली मिस। हमने बोला कि 2 साल में दूंगा प्रोजेक्ट, 3 साल में दे रहे, 4 साल में दे रहे, कमिटमेंट कंसिस्टेंटली मिस हो रही है हमारी, है ना। तो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉलो करना पड़ता है। लेट डिलीवरी, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉलो करना मतलब एसडीएलसी मॉडल फॉलो करना, है ना। तो जो ड्यूरेशन है उसका, जो बजट है उस टाइम में देना, डिलीवर करना, मेंटेन करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन करना, है सब कुछ है। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो लेट डिलीवरी हो सकती है, लास्ट मिनट क्रंचेस हो सकते हैं, कुछ भी चेंजेस करना है तो, है ना। दैट इज आल्सो द प्रॉब्लम्स। देन क्वालिटी प्रॉब्लम्स, देन टू मच रिवर्क, बार बार रिवर्क करो जब तक हमको नहीं मिलता है ना, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, देन फंक्शन डू नॉट वर्क करेक्टली, कस्टमर कंप्लेंट्स आफ्टर डिलीवरी, पीपल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो दैट इज द थिंग्स इफ यू आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, सो ये सब चीज़ें हो सकते हैं। तो ये ऐसा कोई होता नहीं है, सब लोग वही फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोसेस और एसडीएलसी मॉडल। सो there is clearly mention the SDLC मॉडल। सो हमको क्लियरली डिलीवरी होती है, क्लियरली एक्टिवनेस हम चेंजेस अलाउ करते हैं, तो सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सो ये सब डिसएडवांटेजेस है अगर कंपनी प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो। एंड दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। सो with the starting of our training session we started from the project management also। ओके, मैंने कैसे प्रोजेक्ट कंपनी में मिलते हैं, प्रोजेक्ट मिलने के बाद एक एसओडब्ल्यू होता है, ठीक है, साइन ऑफ वर्क, उसके पहले एक फेयर रिक्वेस्ट प्रपोजल होता है, देन साइन ऑफ वर्क, देन किक आउट मीटिंग, project manager identification, then project manager is going to start all the documentation. Okay, development team and the testing team, business analyst will be there. They will design solution architecture for the entire application, then creating the documentation, design. Okay, front end, back end means a database designing, and simultaneously the software testing is involved. Okay, tester is going to take the write the test plan and test scenario, test cases. ओके, दिस इज ऑल दिस प्रोसेस कम्स अंडर। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट मिलता कैसा है, इनिशियलाइजेशन, देन प्लानिंग करते, एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन मतलब डेवलपर वगैरह, है ना, फिर मॉनिटरिंग, देन कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग द प्रोजेक्ट। ओके, ऑल दिस रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड फ्रॉम द टेस्टिंग साइड, देन यू कैन क्लोज द प्रोजेक्ट। ओके, सो क्लोजिंग प्रोजेक्ट जो ज़रूरी है डिप्लॉयमेंट के लिए, सो हमेशा टेस्टर की राय ली जाती है at the last। Okay, all the requirements are met and there is no any bug, all the bug is fixed. If there is no bug, okay, all the requirement fixed, then we can say that we are going to ready to release। So the project manager who can accomplish the all this task। Okay, so project manager is very important। So ये सब चीज़ें हो चुके हैं, इनिशियलाइजेशन मतलब इनपुट प्रपोजल, ओके, स्टेटमेंट ऑफ वर्क। सो रिक्वेस्ट फेल प्रपोजल होता है सबसे पहले फारस, देन स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जो हमको क्लाइंट आता है बोलता है कि हम मुझे ये बनाना है। सो कंपनी हम उसको एक रिक्वेस्ट प्रपोजल देते हैं कि ये इतना रफली कॉस्ट रहता है। देन स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जो हम फाइनल प्रपोजल मिल जाता है उसको बोलते हैं फाइनल प्रपोजल एग्जैक्टली। देन यहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट हो जाता है। आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट मैनेजर, कंडक्ट द प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग, आइडेंटिफाइंग रिस्क एंड एवरीथिंग, देन यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। ओके, सो ऑल दिस प्लानिंग एंड एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म, setting project objective, quantitative goals, requesting the identified resources, कितने लोग लगेंगे, क्या रहेगा, वो सब चालू हो गया। prepare the project management plan, that is prepare for what, who is will be prepared, project manager will be prepared। So that is known as PMP। Okay, project management plan, development plan, change management plan, SQA plan, testing plan, वही है। get the PMP approval, then from the client and मैनेजमेंट। ओके, पीएमपी अप्रूवल हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो फिर उसके बाद हमारे बाकी के डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेंबर फॉर अ चेंज कंट्रोल बोर्ड, ओके, चेंज मैनेजमेंट,
So that is management level. Then major activities can be performed after the project plan. Executing the PMP means uh, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एग्जीक्यूशन करना. वंस अगेन ये साइन अप हो गया है मैनेजमेंट से और क्लाइंट से, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर द एंटायर द प्रोसेस. ओके, ट्रेस द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ट्रेस track issues, raise complaint, then resources, track the project changes, CM activity, change measure activities. Okay, so that is what change management. Then metrics मतलब data, monthly analyze the data, initiate corrective and preventive action, revising the plan schedules. Okay, ये सब कंट्रोल करता है. So that is the project execution monitoring and controlling इस प्रोसेस में आती है. देन क्लोजिंग द प्रोजेक्ट, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर टेस्टर को डिस्कस करना. ओके, जब हमको प्रोजेक्ट क्लोजिंग पे आते हैं तो दैट इज इंटीमेट द प्रोजेक्ट क्लोजर टू एसक्यूए टीम एंड अफेक्टेड द ग्रुप्स. ओके, जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस रहते हैं टेस्टिंग टीम को पूछते हैं एट द लास्ट. ओके, परफॉर्म द ऑल द क्लोजर एनालिसिस, जितने भी रिपोर्ट्स है वो आई कि नहीं प्रॉपरली. ओके, कंडक्ट द क्लोजर मीटिंग, सबमिट द मैट्रिक्स एनालिसिस टू द एसक्यूए एंड रिलीज द रिसोर्सेस. Then that is release. Okay, then after that delivering the project to the customer, then customer satisfaction survey. And that major activity is going to be performed, that is planned for the survey every quarterly. Okay, 3 month, send the satisfaction survey to the customer, obtain the feedback, the review the feedback and come up with the action plan and on the improvement areas. Okay, submit the same to the QA team. So कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत गिरी है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत गिरी है, तो after taking the customer survey it can be work. Okay, that is mandatory, not mandatory sometimes. Okay, that is dependent. Then again we are going to assign the same task, then we are going to do the change request. Okay, so how the change request can be performed. So in the agile process we already seen how the change request is performed, because there is a sprint and there is a product backlog. Okay, no problem, but at the delivery, at the delivery time, so then we require some change, that is a change request. Okay, so we can go from the this. So project manager will take the क्या बोलते हैं उसको, project manager take care of it. Okay, then major activity that is performed, we need to create what, prepare the change request. Okay, we are not going to write this everything. Okay, we are the tester, we get the all documentation, whatever the change request has happened, the developer is do on the change request, and we are going to test the application or change request as per the requirement. That's it. Okay, so the perform the impact analysis, workflow, that everything will be take care of the project manager and entire team. Okay, so the re-estimating the delivery schedule. Okay, who is involved here? No tester is involved. Review the impact with the senior management and other affected groups. Okay, obtain the approval from the change control board, obtain the sign customer sign off. So management will take care of everything. Okay, project manager and manager. Okay, so the implement and approve the changes of the, then here the changes will be applied for the developer team. So developer will try to develop that one, then we are going to review and the testing process to verify the implement of the changes. जो भी implement किए हैं changes are improve किए हम उसको change करेंगे, sorry check करेंगे tester. Okay, then update the closure status of the change request according to change request. Next documentation will be done. Okay, change request के according हम और एक test रिपोर्ट बना देंगे इसके बारे में कि हमने टेस्ट रिपोर्ट ये किया और चेंज रिक्वेस्ट में ये हुआ और अकॉर्डिंग टू द चेंज रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट दैट इज वर्किंग, दैट इज ओके फाइनल. Okay, then SCM, software configuration management. Okay, so every software and hardware that is required what configuration. So if you want to install the any software, so software having the some compatibility, that hardware required that is required a compatibility. Okay, सो हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड. सो जो भी हमारा एंड्रॉयड का वर्जन है जो हमको इंस्टॉल करना है, सो दैट इज़ मिनिमम हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड, सम 1 GB रैम एंड रिक्वायर्ड स्नैपड्रैगन processor having this so hardware requirement. Okay, configuration is required. So like that way we have to, the developer will take the responsible. Okay, or other team is responsible for configuration management. Okay, so according to that one they are going to create a configuration. So suppose it is only work in the platform that is operating system, that is what Windows or any browser means, that is what
server side. Okay, server side you can deploy there, and as per that one, so if you want to install this one in the customer side application, that is app, mobile app, so that required a minimum configuration, so that totally defined in the current software configuration management. So there is a one application, mobile application as well as the website. It is deployed in the server, but to install the app in the mobile of the any user, so that requires some minimum configuration. Okay, suppose this is the Android app, so the Android operating system is required, right? So they will develop the Mac or mobile applications also. So this is what software configuration management as well as hardware configuration management. Okay, so the technical team will be involved here. Okay, they will take care of this. This is the process for identifying, organizing, and controlling the changes to the software during the development and maintenance. Okay, SCM is support activity that makes technical and managerial activities for more effective. So SCM operates throughout the software life cycle. So methodology to control and manage the software development project. So what is the purpose? To establish and maintain the integrity of the work product. So that is very important, integrity of the work product. Okay, so this during the software development, this team will technical team will be ensured here. Okay, hardware and networking team, hardware and software team. Okay, that is maintaining. So here the same software configuration is always required. Okay, no one will ask in the interview for the testers. Okay, also the developer को भी ये पूछते नहीं है. Multiple people have to work on the software is changing. Okay, project deliver in the several releases, that is what build. So that's why software configuration management is required. So they use here the GitHub. Okay, GitHub हम यूज़ करते हैं, डेवलपर टेस्टर भी यूज़ करते हैं, डेवलप जो भी ये डेवलपर ने कोड लिखा, ये डेवलपर ने कोड लिखा, तो ये एंड ऑफ द डे दैट विल merge the code to the GitHub, that will upload to the GitHub or Git bucket. ओके, यहाँ पे सर्वर पे अपलोड करेंगे. सो दिस इज बिल्ड वेरी, इट्स नोन एज द वर्जन कंट्रोल सिस्टम. ओके, इसको बोलेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम. द एंड ऑफ द डे दैट इज कॉन्फ़िगर. ओके, सो हियर द सॉफ्टवेयर इज गेट कॉन्फ़िगर. सो दैट इज व्हाट एससीएम. ओके, तो ये ज़रूरत क्यों गिरती है कि क्योंकि हमारा डेली सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहता है, डेली हमारा चेंजेस होते रहते हैं, और यहाँ पे वो कमिट करते रहते हैं डेवलपर. ओके, सो देन हम उसको डाउनलोड करते हैं हमारे लोकल सिस्टम में, देन हम उसको टेस्ट करते हैं और उनकी रिपोर्ट चेंज कर देते हैं, बता देते हैं. सो प्रोजेक्ट हमेशा हमको डिलीवर होते हैं रिलीजेस पे, बिल्ड में, क्योंकि एक ही टाइम पे पूरा प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, बिल्ड बिल्ड के हिसाब से मिलता है, पहला बिल्ड दूसरा बिल्ड वर्जन के हिसाब से. So that's why the software configuration is also required. Software must run on the different machine also as well as the operating system. Okay, so that is what very important, because तो कैसा कि rapid evolution of the software and hardware. तो सबसे पहले पेंटियम 4, तो हमारे हार्डवेयर कैसे अपग्रेड होते जा रहे हैं, और सॉफ्टवेयर भी हमको अपडेट करना ज़रूरी है. तो हमारे जो एप्लीकेशन हम प्रोडक्ट बना रहे हैं सॉफ्टवेयर का, वो भी हमारा अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो गूगल क्रोम है वो भी अपडेट होते रह रहा है, तो उसके हिसाब से हमारी एप्लीकेशन जो आपने डिप्लॉय किया सर्वर पे, जो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है, so that is should be openable into the that updated or latest version of the Google Chrome or any browser, as well as the हमारा जो ऐप है वो भी अपडेट होना चाहिए as per the requirement. ठीक है नहीं? सो ओल्ड हो गया है, जैसे हमारा 3-3 4-4 महीने में बैंकिंग ऐप हमको अपडेट करने पड़ते हैं. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. ओके, ये अपडेट होना चाहिए और हमारा एप्लीकेशन भी अपडेट होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट. जैसे हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे इंप्रूवमेंट होते रहते हैं. सो प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम द पुअर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अगर हमारा पुअर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रहा, सो हम रोल बैक नहीं कर सकते प्रीवियस सबसिस्टिंग वन चेंजेस, ओवर राइट अनदर, ये हो सकता है. ओके, ओवर राइट हो सकते हैं चेंजेस, विच कोड चेंजेस बिलोंग टू द विच वर्जन आई डोंट नो. ओके, वी हैव द डिफरेंट बिल्ड एंड कहाँ पे आपने वर्क किया, वो प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम गिटहब यूज़ करते हैं बिल्ड वर्जन सिस्टम. ठीक है. Then false which were fix or reappear if you don't configure properly builds, so we can't identify where we have fixed the build, where we have fixed the issue, and where it is reappear. Okay, so test work perfectly on the old version, should not that feature be in the this version. Okay, because we also properly maintain the build version, so that is for what we use real time, that is GitHub. Okay, for this purpose we use the real-time GitHub and Git bucket.
okay, developer and tester also. The tester is only that use that one, that is only download the build from the गिटहब और गिट बकेट, ठीक है, सर्वर से डाउनलोड करते हैं टेस्टर, फिर उसको डिप्लॉय करते हैं लोकल सिस्टम में, उस पर टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन। ओके, यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मल्टीपल टेस्टर कॉन्करेंटली एक्सेस रहेगा, डेवलपर भी कॉन्करेंटली एक्सेस करेंगे, ऑर्डरली कंट्रोल ऑफ द चेंज। ओके, सो ऑर्डरली मतलब पहला वर्जन दूसरा वर्जन प्रॉपर ऑर्डर रहेगा। व्यू डिफरेंसेस, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन द वर्जन्स, कौन से वर्जन में क्या डिफरेंस हो रहे हैं, और जो लेटेस्ट वर्जन है अभी कौन सा चल रहा है उस पर हम वर्क करेंगे। रोल बैक द चेंजेस, वी कैन रोल बैक द चेंजेस, जो चेंज किए थे उसको हम और अंडू कर सकते हैं। ओके, तो रिलीज मैनेजमेंट, देन हिस्ट्री, वन ऑफ द की प्रोसेस एरिया, ओके, दैट इज CMM1 लेवल 2, दैट इज हार्डवेयर रिलेटेड। ओके, सो ये लेवल पे हम चेक कर सकते हैं। सो नाउ द दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर। ओके, अप टू हियर नो वन विल आस्क इन द इंटरव्यू। ओके, ये जो है ये कुछ आपको पूछेंगे नहीं इंटरव्यू में। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द इंटरव्यू, ये है, दिस इज द इम्पोर्टेंट इन द इंटरव्यू। जो मैं अभी तक डिस्कस किया हूँ वो कुछ पूछने वाले नहीं है इंटरव्यू में। उसमें से एक चीज़ इम्पोर्टेंट है सर्वर रिगार्डिंग, दैट इज व्हाट मैंने जो नाम लिया था गिटहब, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट्स अ बिल्ड गिटहब वर्जन सिस्टम, वर्जन बिल्ड, क्या बोलते उसको, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो, ठीक है, बिल्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वो इम्पोर्टेंट है। सो द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल, सो SQA एंड SQC, एश्योरेंस मतलब वेरिफिकेशन, कंट्रोल मतलब वैलिडेशन, ठीक है। सो most of the time the interviewer can ask the questions what is the difference between the SQA and SQC. Sometimes they can ask the SQA and QC, okay, all are same, but it's a quality assurance and quality controller. Okay, quality assurance means verification, quality controller means validations. Okay, so we are going to check assurance means whether the application is building as per the requirement or not, and control means to check whether the application is built as per the client requirement or not. Okay, verification means go through. Okay, so the process verification means the process, okay, so properly चल रहा है कि नहीं, उस प्रोसेस में वर्क हो रहा है कि नहीं, एप्लीकेशन बिल्ड हो रही कि नहीं। और कंट्रोल मतलब, वैलिडेशन मतलब बिल्ड हुआ वाला प्रोडक्ट चेक करना, और वेरिफिकेशन मतलब हम चेक कर रहे हैं कि प्रोसेस प्रॉपर चल रही है कि नहीं, बिल्ड हो रहा है कि नहीं प्रॉपर। ओके, सो दैट इज व्हाट SQS belong to the verification. So identify the standard and guidelines. Okay, we have the documentation, go through the documentation. Process oriented, okay, preventing the problems, okay, then continuous improvement, audit, check for the conformance. So just we are going to check audit that one whether the system is building as per the requirement or not. So for this one we need to identify all this documentation standard. Okay, as per the requirement, it's working of the as per the requirement or not. So implementation, then you can check here the SQC means software quality controller. C stand for controller. Okay, software quality analyst, software quality controller, QA, QC, manual tester, tester, okay, quality analyst, ये सारे टेस्टिंग की ही जॉब है। ओके, क्यू सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, QA इंजीनियर, ओके, कुछ भी कह सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट नेम बट रोल इज सेम। ओके, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सेम, दैट इज रोल बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सेम। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोलर, क्वालिटी एनालिस्ट, QA इंजीनियर, ओके, ये सब सेम ही है, ठीक है, ऑल आर सेम फॉर द पोस्ट, रोल के लिए। जो भी हमको नौकरी में ये जो पोस्ट दिखते हैं वो सभी सेम है, उसको अप्लाई करना है। ओके, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू टेस्टर्स। So that is for what belongs to QVC is belongs to the validations. Okay, so we are going to check the build application is build application जो हुई है तो हम उसको टेस्ट करते हैं according to the requirement. Okay, so implement the standard and guidelines, product oriented, detecting the problems because we are going to test the application. Okay, हम detect problem defect कर रहे हैं, ओके, डिफेक्ट इशू चेक कर रहे हैं हम। सो डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम, फाइनल चेक पॉइंट बिलोंग्स टू द डिलीवरी, that is comes under the validation controller. Okay, so we can check verification and validation.
Okay, what is the difference between the verification and validation? Verification means whether the system is developing as per the requirement or not. Okay, validation means whether the system is developed as per the client requirement or not. Okay, so that is the most important thing for the verification and validation. So verification, validation are the basic ingredient of the software quality assurance. Okay, SQA activities. So testing activities है. Okay, so verification check whether we are building the right system or not. Okay, हम बराबर बना रहे कि नहीं applications. So validation means जो बनी हुई सिस्टम है वो प्रॉपर है कि नहीं. ओके, सो validation means check whether we are building the system right. Okay, system right or not. So we are building the right system. हम बना रहे क्या सही और बनी है क्या सही. ओके, वो डिफरेंस है. ओके, प्रोसेस प्रॉपर चल रही कि नहीं, दैट इज वेरिफिकेशन. और वैलिडेशन मतलब टेस्ट द बिल्ड एप्लीकेशन, बनाई हुई सिस्टम को टेस्ट करना. ठीक है, सो वेरिफिकेशन में कौन सा स्ट्रैटेजी आती है? सो वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी कंप्रोमाइज द फॉलोइंग, दैट इज रिक्वायरमेंट रिव्यू. हमने पहले भी देखा था, डॉक्यूमेंटेशन वॉक थ्रू है ना, कोड भी रिव्यू. सो दिस इज व्हाट रिक्वायरमेंट रिव्यू मीन्स. एफआरएस डॉक्यूमेंट और एनी रिक्वायरमेंट रिव्यू है ना, वो चेक करना डॉक्यूमेंटेशन जो भी क्लाइंट्स ने दिए उसके हिसाब से है ना, प्रॉपर है कि नहीं. दिस इज वेरिफिकेशन. डिज़ाइन रिव्यू, जो भी आर्किटेक्चर बनाए, डेटाबेस डिजाइनिंग, यूज केस डायग्राम, all these documents we can review. Code walkthrough. Okay, then code inspection. It's just like a inspection walkthrough. Okay, code by code, line by line, ऐसे और ये check करना. So that comes under the verification. Okay, then validations strategy is what? Unit level testing means validating. Unit level testing means what? We are going to check the code, means whether before sending the to the QA team, so developer is do the unit testing. Okay, so unit testing means one small code or unit one module code they executing and checking the output we are getting or not. This is what unit level testing. Okay, this is the process of validations also. Integrate level testing, all these modules are integrated properly or not. This is also the validation process. System level testing, all this system level testing means end to end system. Okay, end to end testing, that is comes under the what? Compatibility testing, usability testing, right? Performance testing, everything. Okay, that is what validation process. Alpha testing. Okay, alpha testing generally did what? User acceptance testings. Okay, with client or user sitting with the developer and tester. Okay, so any potential user can do the alpha testing. Okay, beta testing only do by customer, or you can say the user, you know, only user, end user, you can say the only end user. But alpha testing can do the potential user, those having the knowledge of the domain knowledge. Okay, but in the developer side. Okay, and beta testing that can be happen only in the client side. Okay, only end user will do. So that is a part of here UAT. Okay, so they use the word that is UAT is the last stage. Okay, user acceptance testing. सो जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं और अगर उसमें हमको बग नहीं मिला, ठीक है, लेकिन हमको यूएटी के टाइम पे बग मिला. सो बग किसको मिला? कस्टमर को मिला, यूज़र को मिला, एंड यूज़र को मिला. सो वो जो बग है वो यहाँ पे हमारा कवर नहीं हुआ है और यहाँ पे हमको मिला नहीं है. तो इस बग को हम बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि डिफेक्ट लीकेज. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, डिफेक्ट लीकेज. ठीक है, यहाँ पे डिफेक्ट लीकेज हो चुका है. ठीक है, डिफेक्ट लीकेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. सो ये वर्ड्स वगैरह आ सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे. ठीक है, तो ये इसको याद रखने का. डिफेक्ट लीकेज का मतलब क्या होता है कि जब हम टेस्टिंग टीम टेस्ट करते हैं तो उसमें हमको डिफेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं उस टाइम पे ये जो डिफेक्ट इशू होता है तो उसको हम बोलेंगे कि डिफेक्ट लीकेज. ठीक है, ये मैंने 2-3 बार बता चुका हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग. Okay, whether it is for in the local system or deployment for part of this one, also in the beta testing also. So these are what? Validations strategy. Okay, unit level testing, integration, system, alpha, beta, user acceptance, that is a part of the user acceptance testing, that is alpha and beta testing. Okay, this is what validations. What? ये कैसे बना, चेक करते जब प्रोडक्ट बनता है उस टाइम पे हम चेक करते जितना मॉड्यूल लिखा है उतना टेस्ट करना वगैरह.
वेरिफिकेशन जब बन रहा है तब चेक करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सही बन रहा है कि नहीं. ओके, ऑल दिस रूल्स प्रॉपरली फॉलो हो रही कि नहीं. ठीक है. So the verification strategy, okay, we seen what requirement review. Okay, so requirement review and design review, code walkthrough, and code inspection, right? So requirement review, we see the requirement. Design review, we see all the design documentation, code walkthrough. Okay, so you can check here the verification strategy. That is what happen in the requirement review. Okay, what we are going to study here. So here just study discussion of the computer system requirement to ensure that they meet the stated user needs or not, है ना. So पूरे feasible है कि नहीं, user needs जो भी है तो उसका deliverable क्या होगा. Deliverable मतलब होता है output. Okay, जो document. So review the statements of requirement. Okay, इसका deliver रहेगा कि we just review the statements of the requirement. We seen that all this requirement. Okay, that is what verified. Design review, so then study and discuss the of the computer system design to ensure it will support the system requirement. Okay, वैसे हिसाब से डिजाइन हुआ है कि नहीं. So what will be the deliverables. Okay, approve the high level design and low level design included database design, UI design and unified modeling language diagrams. तो इसका जो डिलीवरेबल है मतलब उसका जो आउटपुट है ये आना चाहिए हाई लेवल डिज़ाइन, दैट इज का आर्किटेक्चर डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन इंक्लूडिंग द डेटाबेस डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन, यूएमएल डिज़ाइन. ये सब हमने स्टार्टिंग ऑफ द आवर मैनुअल टेस्टिंग उस टाइम पे हमने आपको बताया है. ओके, ये सारी डिज़ाइन चेक करना. वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी दैट इज डिज़ाइन रिव्यू. ओके, रिक्वायरमेंट रिव्यू, रिक्वायरमेंट चेक करना ऑल दिस वन. डिज़ाइन रिव्यू ऑल दिस डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है ना, अप्रूव डॉक्यूमेंट सब. Then code walkthrough and code inspection. So code walkthrough matlab what? So information analysis of the program source goes to find a defect and verify coding techniques. ओके, सो जो डेवलपर है वो कोड वेरिफिकेशन करते हैं, कोड वॉक थ्रू कर सकते हैं वहाँ पे. ओके, सो उस टाइम पे कोड को भी टेस्ट करेंगे. आल्सो द टेस्टर विल बी देयर, check that one those having the knowledge. Okay, so that will what is will be the deliver for that one. Deliverable क्या रहेगा, software ready for the initial testing by the developers. Okay, so the code walkthrough that is involved in the developer. Okay, so this is what verification strategy. This is also the part of testing. Okay, so developer write that code and verifying that one. Okay, initial testing, that is initial testing. So software is ready for the initial testing. Okay, that is done by the developer. Then code inspection also done by the developer and testing team. Okay, so formal analysis of the program source code to find a defect as defined by the meeting system design specification. What will be the deliverable for this one. Software is ready for the testing by the testing team. Okay, so the code walkthrough means by the developer. Okay, we test the code by the developer. Is it okay to initial stage, software is initial stage में ready है क्या. That is one build also we can see. Code inspection, okay, if they are having the any defect, so execute करते समय कुछ defect मिल रहा है क्या as per the requirement. Okay, not available, then software is ready for the testing. Okay, by the testing team. Okay, so the testing team is involved and then ready for that one. So these are the techniques for what verification techniques. Okay, requirement review, design review, code walkthrough and code inspection. Just inspecting the source code, that's it. Okay, not we are going to do the more much logic and applying the any mode of the logic. Okay, this the logic will be applied in the validations, not verification. Okay, so इसका मतलब UI designing. Okay, front end design, UI designing, code inspection. So the validation strategy means unit level testing. So we write one single level of program and we'll check within the module unit of code, executing the code. Okay, execution of the code. Here we are not executing the code, we are just walk through. Okay, we just a code inspection. Whatever we are written the code, just we are checking that one, but we are not executing. Here the validation, that is executing the code. Okay, then software is ready for the testing with other system components or not. Okay, so unit testing is required. Level of testing you know already.
So integration level, all these modules are integrated properly or not. So we are going to test the related program. Okay, developer also test, and tester will be check the all these modules are integrated properly or not. The tester will test the all this code are integrated, or one module is reflecting with the other modules or not. Okay, then what will be the deliverable for that one? So portion of the system is ready for the testing with other portion of the system, one portion with another portion, that is integrated, one module and another module are integrated properly. So that will be the ready for tested or not. Okay, that will be the deliverable in the integration level testing. Okay, system level testing means so end to end testing, so all these modules are integrated properly or not, and system is flow properly, compatibility testing, performance testing, everything. Okay, so the testing of the entire computer system. Okay, the testing of entire end to end system, you can say entire computer system across the all module, this kind of the testing can be included functional and structural testing both. Okay, what will be the deliverable? Now the your application is ready in the computer system. Okay, the tested the computer system based on the what was specified to be developed. जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपेटिबल है, परफॉर्मेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी है. ओके, यूजेबिलिटी, कंपेटिबिलिटी, जीयूआई टेस्टिंग, एवरीथिंग. Okay, then we go for the user acceptance testing, that is what alpha testing. Okay, so testing the whole computer system before rolling out to the UAT, user acceptance testing. Okay, so here we do go for the alpha testing, stable application or not. Okay, so we doing going through the alpha testing, so we'll get here the stable application. So now this is stable. Okay, so validation process, that is user acceptance testing. So alpha testing, beta testing is a part of the user acceptance testing. So user acceptance testing means that is ready to work. Okay. So testing of the computer system to make sure it will be work in the system regardless. Okay, of what the system is requirement indicate. As per the requirement, this system is built or not. So that is testing by the acceptance testing. So we can test here and accept the testing based on the user needs. Okay, based on the user need, that is very important. जो सा user को चाहिए, end user. Okay, so we are going to test, that is the level of testing. Installation testing, install and uninstall application using the various operating system with browser. So approval what .exe file. Okay, this also can be done comes under the validation process. Beta testing also comes under the validation process. So testing of the application after installing the application at the client place. Okay, with the client space. So end user will do this one, successfully install and running the applications or not. That is what deliverable. So this what the process in the validations. Okay, these are what validation strategy. Okay, verification, code review, walkthrough, inspection, review, validation, unit level testing, integration testing. Okay, all the types of the testing, functional testing, acceptance testing, installation testing, that is what strategy. Okay, these are the validation strategy. Okay, so this is what verification and validation. So इसमें कुछ डाउट है अभी वेरिफिकेशन वैलिडेशन में? Okay, so now the most important thing, that is what SDLC models. It's a very important. We know the SDLC model. SDLC model is for what? To develop the project, software project, है ना? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए हम फॉलो करते हैं क्या? SDLC process. Okay, we follow what? SDLC process to create, okay, to create a perfect project, right? So the SDLC models we required, है ना? So that is very important, because every software is come through the what? SDLC, that follows the SDLC models. Okay, any SDLC model, and we follow the SDLC model. Right now we can check here in the SDLC model how the verification and validation will be covered. Okay, so in the first phase of the every SDLC model is what requirement capturing. Okay, gathering the requirement, right? So that is the most important phase in the SDLC model.
all the requirement get captured, then we'll see here requirement review. Okay, so all the requirement capture, but we can check the all the requirement it's covered or not, so we are going to do here requirement reviews. Then the analysis, designing, coding, testing, implementation, support, these are the what various part, various phases are involved in the SDLC model. So in that requirement capturing, then we are going to design. Okay, we analyze all the requirement. According to that one, we design what documentations, and we design the documentation as well as before we write it documentation or UI designing. We are going to create interface, okay, that is UI. And before that one we designed some documentation, architecture design, various documentation we designed, that is UML diagrams, UI diagrams, use case diagram, all the documentation, okay, diagrams. So we are going to check the that review the all the designing, that is also the verification code. Then as a part of designing the coding, okay, according to the designing part of the developer is write the code. Okay, so in that the developer we go for the code walkthrough, then code review. This process is involved in the verification. Okay, this process is involved in the verification. And now then execute the code, that is what unit level testing, one of the module or one unit program that is executed. Integration level testing, system level testing, user acceptance level testing. This for the level of the testing, that we already seen. Okay, that is very very important. So that is comes under what validation process. So every SDLC models verification and validation are required. Okay, so जो भी हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसको वेरीफाई करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, दैट इज व्हाट वेरिफिकेशन. So every SDLC model, the every software models, okay, software development process, verification and validation is very important there. So that is very very important. And now, so also the SDLC process. Okay, we know we follow the SDLC model to develop the software or application. So there is also the very important phase for us, that is what testing. So in the testing we have the testing life cycle. We know the सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बहुत सारे फेजेस में से होके जाती है, और लास्ट में हम सपोर्ट मेंटेनेंस टेस्टिंग करने के बाद हम इम्प्लीमेंट कुछ रहा रिक्वायरमेंट और हम मेंटेनेंस करते हैं, डिलीवर करते हैं. ठीक है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. बट एज अ टेस्टर, okay, we must have to know the STLC process, and this is very 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 important for a tester. Okay, they will ask you which SDLC model you follow. You can say agile or waterfall, whatever. Okay, they will ask what are the important phases in the SDLC process. You can explain. Okay, SDLC model, software development life cycle. And the 99% interviewer can ask this question, that is what is the STLC process. Okay, STLC, because you are the tester, we must have to know this process. Okay, software testing life cycle, very very important for the tester. Software testing life cycle. Okay, so here we are involved, this is our life cycle. Testing process, how is involved in the testing process. Okay, what types of testing, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मीन्स व्हाट, कि कौन से आप एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो या वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो. Okay, this is not a general type of the testing, it's a application types of testing. Okay, if you are doing the desktop application, then what we are doing, need to do here. And if you are testing the web application, what we are need to do here. Okay, so the most important point here, that is STLC testing process. Okay, software testing life cycle. So the most important, okay, so in the software testing life cycle, what are the most important phases are there? That is what, first is test plan. So who is going to prepare the test plan? Test lead. Okay, how to explain the STLC process? So STLC is the software testing life cycle process. In that, first of all, we are going to analyze the requirement. We are discuss the requirement, understanding the requirement, and then the test lead is responsible for creating the test plan. Okay, according to the test plan, then we are going to write the test scenario, possible all the test scenario. ओके, जैसे टेस्ट सिनारियो साइन अप हो गए, देन वी आर गोइंग टू राइट हियर द टेस्ट केसेस डॉक्यूमेंट.
Once this is sign off, then we are going to execute the test cases. And while executing the test cases, if I found any defect, so we go for defect identification. I am going for the defect identification, and the defect is get identified, then we are going to discuss. Also, if I found a defect, I am going to check the defect with other environment, okay, other browser. I am going to check, and still I am getting the same defect, then I am going to report that defect to the Jira. Okay, so here the Jira is a defect reporting tool we are using. Okay, so I am going to defect where I am going to report the defect into the Jira. How? Writing the step to reproduce. Okay, ये कैसे करेंगे हम बताएंगे, don't worry. So this is the process. So defect reporting. Once I report the defect to the Jira, so it will assign to the developer. Okay, developer को assign हो गया. Then developer that can be accept and reject. If the developer get accepted the defect, so then I am going to track that defect. Okay, defect tracking is involved. That is also the one page. Defect tracking. So देखिए डिफेक्ट ट्रैपिंग में हम क्या क्या चेक करते हैं कि स्टेटस ऑफ द defect, so whether it is accepted by the developer or not. If they are accepted by the developer, then we'll check here which is in the which state. Okay, to do. Okay, to do है. ओके, टू डू मीन्स अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया. उसके बाद इन प्रोग्रेस. नेक्स्ट स्टेज मिलती है इन प्रोग्रेस, मतलब उसने एक्सेप्ट किया है और वो इन प्रोग्रेस में है. और यहाँ पे आता है टू डू इन प्रोग्रेस और डन स्टेट. ओके, सो दिस इज व्हाट डिफेक्ट ट्रैकिंग. ओके, वी आर टेकिंग योर डिफेक्ट ट्रैकिंग. सो अभी तक टू डू में है मतलब उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया. अगर इन प्रोग्रेस में आ गया मतलब डेवलपर ने उसको रिसीव किया, अभी वो वर्क कर रहा है वहाँ पे. सो दिस इज व्हाट, एंड डन हुआ कि नहीं वो चेक करना. दिस व्हाट डिफेक्ट रिपोर्ट, डिफेक्ट ट्रैकिंग. ओके, सो वी आर ट्रैकिंग दैट डिफेक्ट. स्टेटस क्या है. देन द डेवलपर गेट एक्सेप्टेड एंड he has fixed the defect, so we'll check here the done state. That means the developer has fixed the defect. Okay, once it is fixed the defect, then we are going to retest the same thing. That is what reproducing the same test case. वही टेस्ट केस हमको और एक बार री एग्जीक्यूट करना है. That is what retesting. Okay, so we can check the defect is okay, and this is not impacted on the other areas also. That is regression testing. And this is successfully we can check that defect is okay and everything is okay. Then we can say the defect is closing and then release the test case. Okay, so this is what STLC process. कैसे याद रखेंगे. इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस है. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सबसे पहले. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होती है. FRD, हाँ, FRD. नहीं 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 नहीं, वहाँ से नहीं स्टार्ट होती है. वो तो जनरल डॉक्यूमेंट्स हो गए. टेस्टिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, ये मेरे तीसरे चौथे पांचवी पीपीटी में होगा, स्टार्टिंग के पीपीटी में. हाँ, टेस्ट लीड असाइन करेगा. यस, तो हमारा जो टेस्टिंग प्लान स्टार्ट होता है टेस्ट प्लान से स्टार्ट होता है. ठीक है, जो टेस्ट लीड है वो क्या क्रिएट करता है, टेस्ट प्लान. टेस्ट प्लान में सब कुछ लिख के रहता है कि हम ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्स कितने लगेंगे, कैसे मेथोडोलॉजी है, क्या टेस्ट करना है, टाइम कितना लगेगा, रिस्क क्या है, डिलीवरेबल क्या है, प्लानिंग कैसे करेंगे, एस्टिमेशन सब लिख के रहेंगे वहाँ पे. कैसे कैसे कौन से टूल्स यूज़ करने वाले हैं हम. ओके, मैनुअल टेस्टिंग है, ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या करेंगे, फंक्शनल टेस्टिंग में क्या क्या चेक करेंगे, सब कुछ रहेगा वहाँ पे. और वो डायनामिक रहेगा टेस्ट प्लान, चेंजिंग होते रहेगा वहाँ पे. सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि सबसे पहले हमको टेस्ट प्लान क्रिएट करना है. ये STLC का प्रोसेस है, तो ये कौन क्रिएट करता है, टेस्ट लीड. सो जैसे टेस्ट प्लान क्रिएट हो गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चीजेस है, कौन से, एक टेस्ट सिनारियो और टेस्ट केस. टेस्ट सिनारियो का मतलब होता है कि व्हाट टू टेस्ट. टेस्ट केसेस का मतलब होता है कि हाउ टू टेस्ट. ओके, व्हाट टू टेस्ट एंड हाउ टू टेस्ट. टेस्ट सिनारियो का मतलब होता है व्हाट टू टेस्ट. ओके,
टेस्ट केसेस मतलब हाउ टू टेस्ट, और टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनारियो के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक एग्जांपल के बारे में। ठीक है, तो हम जैसे लिखेंगे वहाँ पे कि सिनारियो अगर हम लिखेंगे, सपोज मैं एक सिनारियो लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैलिडेट क्या था वो, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री एप्लीकेशन, कहाँ गया यूआरएल उसका, ओके। सो द सिनारियो इज व्हाट हियर, ओके। सो जैसे अपने यहाँ पे लिखा है ये, ओके, ये सिनारियो, सिनारियो क्या है कि मेरा, कि वेरीफाई द लॉगिन, ओके, वैलिडेट द लॉगिन पेज, ये क्या हो गया, सिनारियो। ठीक है, सिनारियो क्या हो गया मेरा, वेरीफाई और वैलिडेट द लॉगिन पेज, ओके। ये हो गया सिनारियो, मतलब क्या हो गया कि व्हाट टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना है। ये जो टेस्ट सिनारियो और टेस्ट केसेस है, टेस्ट लीड ही देगा ना हमें? नहीं, हमको क्रिएट करना है। सिनारियो भी हमको क्रिएट करना है? हाँ, सीनियर भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, जूनियर भी रहेंगे, ओके। ओके, हम भी इन्वॉल्व रहेंगे उसमें मीटिंग में। हम्म। जैसे टेस्ट लीड ने टेस्ट प्लान बना दिया, टेस्ट लीड भी रहेगा वहाँ हम्म। पे, फिर हम जूनियर और सीनियर टीम भी रहेंगी, हम डिस्कस करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्या सिनारियोज रह सकते हैं। ओके। ठीक है, तो सब हम आइडेंटिफाई करेंगे सिनारियोज, उसका डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर हम हम्म। वेरीफाई करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपको इस इतने मॉड्यूल के ऊपर आप सिनारियो लिखिए, किसी को और को दूसरे सिनारियो, जैसे हम्म। फिर वो सीनियर वेरीफाई करेंगे सिनारियो, हम्म। जो सीनियर ने हम्म। सिनारियो लिखा वो टेस्ट लीड वेरीफाई करेगा। ठीक है, हम्म। फिर वो साइन अप हो गया डॉक्यूमेंट का, फिर उसके हिसाब से कुछ चेंजेस है तो चेंजेस कर सकते हैं उसमें, वो बोलेंगे हमको कि कुछ चेंजेस करना है, कुछ रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई है, तो रिक्वायरमेंट छुट्टी है क्या कुछ, वो एक बार देखो, ओके, तो इसके ऊपर हुआ नहीं है, तो फिर एक बार वो साइन अप हो गया, साइन अप बोलने का, साइन अप हो गया सिनारियो, तो हम्म। फिर अब सिनारियो के बेसिस पे हम टेस्ट केसेस लिखना चालू करते हैं, तो टेस्ट केस का डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, तो उसमें भी जूनियर सीनियर सब इन्वॉल्व होते हैं टेस्ट केस राइटिंग में, ओके। सेम। ठीक है, सो टेस्टर इज इन्वॉल्व फॉर द राइटिंग द टेस्ट सिनारियो एज वेल एज टेस्ट केसेस, राइटिंग द टेस्ट केसेस। तो यहाँ पे एक सिनारियो मैं आपको बता रहा हूँ, वैलिडेट और वेरीफाई द लॉगिन पेज। ठीक है, ये हो गया वन सिनारियो। अब इस सिनारियो पे बहुत सारे टेस्ट केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टेस्ट केस रहेगा कि वैलिडेटिंग द लॉगिन विथ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये हो गया हमारा पहला टेस्ट केस। ठीक है, पहला टेस्ट केस क्या है कि वैलिडेट टेस्ट केस की टेस्ट सिनारियो? टेस्ट सिनारियो वेरीफाइंग वैलिडेटिंग लॉगिन पेज, ये हो गया हमारा टेस्ट सिनारियो। अब इस टेस्ट सिनारियो के अंदर व्हाट टू टेस्ट, ओके, मतलब हाउ टू टेस्ट, इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो हमारे लॉट ऑफ टेस्ट केसेस रह सकते हैं इसके ऊपर, हम 20-25 टेस्ट केसेस लिख सकते हैं इसके ऊपर, ओके। समझो सिनारियो एक ही रहेगा, लेकिन उसमें जो टेस्ट केसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है, राइट? अभी हमारा सिनारियो क्या है, लॉगिन पेज चेक करना, लॉगिन पेज चेक करना, हाँ। तो आपको इसमें दिख रहा है ना क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये यूआई है, यूआई टेस्टिंग आ गई, ये हम इसको यूजेबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं, ग्रामर मिस्टेक जीयूआई टेस्टिंग कर सकते हैं, ग्रामर टेस्टिंग, ये यहाँ पे ऑप्शन है, ये पॉपअप बटन है, लॉगिन है, उसका कलर है, उसके ये है, इतना सारा है यहाँ पे, कितने टेस्ट केस लिखोगे आप, 25, ओके, 25 टेस्ट केसेस लिख सकते हो इस सिनारियो के ऊपर आप, ओके, 25, 22 से लेके 25 तक टेस्ट केसेस लिखना है आपको, बाप रे। ऑल द पॉसिबिलिटी, है ना।
इतने टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट केसेस है, पूरा टेस्ट करना है आपको, हाउ टू टेस्ट। ओके, दिस इज वन सिनारियो, दिस इज वन सिनारियो। ओके, ऐसे बहुत सारे सिनारियोज रहेंगे, हर सिनारियो के ऊपर के टेस्ट केसेस लिखने हैं। ठीक है, दिस इज वन सिनारियो, वैलिडेट द लॉगिन पेज। ओके, इन दैट सिनारियो यू कैन राइट अ लॉट ऑफ टेस्ट केसेस। मैंने फर्स्ट टेस्ट केसेस लिखा है, पॉजिटिव टेस्ट केस लिखा है कि टू वैलिडेट द यूजर विथ यूजर नेम एंड वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, ये मैंने पहला टेस्ट केस लिखा है। तो इसके लिए लगता है कि टेस्ट स्टेप्स ये एग्जीक्यूट करना है मुझे, तो मेरा यूजर नेम पासवर्ड जो है वो मुझे देना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे टेस्ट डेटा। क्या बोलेंगे? टेस्ट डेटा इज रिक्वायर्ड और नॉट। ओके, तो टेस्ट डेटा भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो सीनियर लोग प्रिपेयर करते हैं टेस्ट डेटा। ठीक है, ये हमको डेवलपर से मिल जाता है टेस्ट डेटा, दिस इज व्हाट टेस्ट डेटा। ठीक है, उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो इस पेज पे जाने के लिए सबसे पहले हमको स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, स्टेप्स, टेस्ट स्टेप्स, टेस्ट डेटा, जो हम डेटा इवेल्यूट कर रहे डाल रहे हैं यहाँ पे, ये टेस्ट डेटा। टेस्टिंग स्टेप्स क्या है? गो टू द लॉगिन पेज, ओपन द ब्राउजर, राइट द यूआरएल। ठीक है, देन हिट द ब्राउजर। ओके, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? टू इंश्योर दैट आवर होम पेज और लॉगिन पेज शुड बी ओपन। ओपन हुआ क्या लॉगिन पेज? ओके, दैट केस टेस्ट केस इज पास। पहले ही हमने लिखा था कि हम यूआरएल डालेंगे तो हमारा ओपन होम पेज होना चाहिए, लॉगिन पेज दिखना चाहिए। दिस इज फर्स्ट टेस्ट केस इज पास। ठीक है, ये होगी पहली टेस्ट केस। मान लो कि हमने यूआरएल डाला, ओपन द ब्राउजर, okay, ensure the internet connection, open the browser, type the URL and home page should be display or login page should be display, then test case is pass। okay, next हम functional requirement लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको बहुत सारा आइडेंटिफाई करना है, जीयूआई रिलेटेड आइडेंटिफाई करना है, नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिलेटेड भी आइडेंटिफाई। फंक्शनल मतलब वैलिडेटिंग के, नॉन फंक्शनल मतलब जीयूआई टेस्टिंग परफॉर्म्स तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जीयूआई कैसा है इसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देन टैबिंग इंडेक्स कैसा है, माउस ओवर कैसा है, कीबोर्ड हैंडलिंग कैसी है, दैट इज कम्स अंडर द यूजबिलिटी टेस्टिंग। है क्या ना, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं। सो यहाँ पे हमने ओपन किया और यहाँ पे हमने ओपन होने के बाद दिस इज व्हाट टेस्टिंग स्टेप, देन राइट अ यूजर नेम इन द यूजर नेम फील्ड, राइट अ पासवर्ड इन द पासवर्ड फील्ड, देन क्लिक ऑन द ऑप्शन। ठीक है, एंड सिलेक्ट एनी वन। ओके, सो आई एम क्लिकिंग ऑन ऑटो लॉगिन until I got explicitly। जब तक मैं सॉरी जब तक मैं एक्सप्लिसिटली लॉग आउट नहीं करता तब तक ये ऑटो लॉगिन रहेगा, ये भी हमको वेरीफाई करना है। Okay, so we are checking username and password and click on the login button। Okay, what is our expected result? Expected result क्या होना चाहिए हमारा? Our home page should be display। Okay, account page should be display with administrator name। ठीक है, ये हमारा expected result है। तो और actual result आया क्या? यही जो चाहिए था हमको, आया कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होनी चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हुआ कि नहीं? होम पेज उसका डैशबोर्ड शो होगा नहीं एडमिनिस्ट्रेटर का, तो हमारी टेस्ट केस पास हो गई है। ठीक है, सो हाउ टू चेक द वी आर गेटिंग पास और नॉट? सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड actual result both are same, then we can say our test case is pass। okay, that is what test case is like, then we can say we have executed a test case। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि हमने हमारी टेस्ट केस एग्जीक्यूट की है। okay, while execution of the test case if you find any defect then you have to report the defect to the Jira। अब समझ में आ गया। सबसे पहले एसटीएलसी की प्रोसेस में क्या होता है, टेस्ट प्लान क्रिएट होता है। वैसे टेस्ट प्लान साइन अप हो गया, देन टेस्ट सिनारियो लिखना चालू करते हैं। टेस्ट सिनारियो साइन अप हो गया, रिव्यू होने के बाद साइन अप होने के बाद टेस्ट केसेस लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट सिनारियो। उसके टेस्ट सिनारियो के हिसाब से हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, फिर हम उसको प्रायोरिटी भी देते हैं, सेवेरिटी भी देते हैं। ठीक है,
तो जैसे हमने टेस्ट केसेस लिखना चालू किया तो हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे टेस्ट केसेस को। अब भी मैंने आपको एग्जीक्यूट करके बताया, ठीक है। एग्जीक्यूट करते समय अगर हमको कुछ डिफेक्ट आता है तो हम उसको डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। अगर वहाँ पे डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो गया है और वो जीन्युइन डिफेक्ट है, सो देन अगेन वी आर गोइंग टू चेक वन मोर टाइम एंड वी आर गेटिंग द सेम इशू, देन वी आर गोइंग टू डू द डिफेक्ट रिपोर्टिंग। ओके, वी गो फॉर द अगर डिफेक्ट। हाँ डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ तो क्या बोलेंगे उसको? अगर हमारा डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो गया है, दिस इज द स्टेज इन द एसटीएलसी प्रोसेस, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट एंड दिस इज द जेन्युइन और नॉट। तो हम चेक करेंगे कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, सच में वही डिफेक्ट है कि नहीं, डिफेक्ट के लायक है कि नहीं वो डिफेक्ट, है ना, इशू इशू के लायक है कि नहीं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, देन वी आर गोइंग टू report that defect. Okay, while reporting, before reporting, we are going to check one more time with different environment. हो सकता है वो मेरे पास ही आ रहा है लेकिन डेवलपर को नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना, तो हमारे सिस्टम का इशू हो सकता है। तो दो बार हम वेरीफाई करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर सेम इशू आ रहा है हमको, देन हम उसको रिपोर्ट करेंगे। कहाँ पे? जीरा में। ओके, डिफेक्ट रिपोर्टिंग। अब जब हमने रिपोर्ट किया तो क्या हो जाएगा, डेवलपर को आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वही टेस्ट केस, सिंपल टेस्ट केस वही, वैलिडेटिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, वैलिडेटिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड मतलब कैसे, वैलिडेट यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट वो कैसा, ऑथेंटिकेट वाला, वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, वैलिडेटिंग द वैलिडेट यूजर नेम एंड पासवर्ड, वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो हमारी टेस्ट केस है ना अभी की, पॉजिटिव टेस्ट केस चल रही है हमारी, कि हम चेक करना है वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड और एडमिन होम पेज ओपन हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। ये हमारा टेस्ट केस चल रही है। तो इसी को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, जैसे हमारा एडमिन लॉगिन नहीं हुआ तो हमारी टेस्ट केस फेल हो गई है, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद, नहीं क्या, तो हम क्या हो गए, हमारे टेस्ट केस फेल हो गए, तो हम क्या करेंगे, डिफो की रिपोर्ट करेंगे। जो भी हमने वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड डाला लेकिन हमारा एडमिन होम पेज ओपन नहीं हुआ, तो हम रिपोर्ट करेंगे डिफॉल्ट का। डिफेक्ट रिपोर्टिंग करने के बाद डेवलपर को आसान हो गया। फिर हम उसको क्या करेंगे, डिफेक्ट ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग मतलब हम चेक करेंगे कि डेवलपर ने एक्सेप्ट किए कि नहीं, और एक्सेप्ट किया तो कौन सा स्टेट में है, प्रोग्रेस स्टेट में या डन स्टेट में है। ओके, टू डू, इन प्रोग्रेस और डन स्टेट, ये 3 स्टेज रहती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। जीरा जीरा में बताऊंगा मैं आपको सॉफ्टवेयर में, टू डू, इन प्रोग्रेस एंड डन स्टेट। तो अगर डेवलपर ने अभी तक उसको पकड़ा नहीं तो टू डू में रहेगा। जब उसको असाइन कर लिया तो उसने, अगर उसने ओपन कर लिया हो इशू, तो इन प्रोग्रेस में आएगा। तो फिर वो डन स्टेट में फिक्स कर ले, फिक्स करने के बाद वो डन कर, क्लोज कर देगा उसको, कि मेरे तरफ से जो आपने डिफेक्ट भेजा था, मेरे तरफ से इशू, मेरे तरफ से सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो जैसे आइडेंटिफिकेशन ट्रैकिंग हो गया, ट्रैकिंग के बाद हम चेक कर रहे हैं कि हमारा डिफेक्ट क्लोज हुआ है कि नहीं, मतलब उन्होंने टेस्ट, डेवलपर ने उसको प्रॉपरली फिक्स किया है कि नहीं। ओके, और फिक्स होने के बाद हम और चेक करते हैं, रीटेस्टिंग करते हैं कि प्रॉपर हुआ कि नहीं, देन वी आर गोइंग टू क्लोज दैट डिफेक्ट। ओके, तो अगर वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो हमारा डिफेक्ट है वो प्रॉपर सॉल्व हुआ है, तो हम उसको टेस्ट केस को और डिफेक्ट को क्लोज कर देंगे और हम टेस्ट केस को रिलीज करेंगे, नाउ द टेस्ट केस इज पास, ठीक है, आफ्टर डूइंग द रीटेस्टिंग। सो दिस इज व्हाट एसटीएलसी प्रोसेस। समझ में आ तो गया? हम ये जो, हाँ हम जो ये टेस्ट सिनारियो और टेस्ट केसेस लिखते हैं ना, तो ये हम मतलब डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं क्या हमारे, यस मतलब यस, कोई एप्लीकेशन होता है उसमें लिखना होता है? वो डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेल में लिखते हैं। एक्सेल में ना? हाँ, वो एक्सेल में लिखते हैं और डायरेक्टली एक्सेल उस टूल मैनेजमेंट में अपलोड भी करते हैं। टूल मैनेजमेंट, ओके। ओके, जीरा में हम डायरेक्टली एक्सेल को अपलोड कर देते हैं ऑटोमेटिक, ओके ओके। या फिर डायरेक्टली हम जीरा में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे लिखना है, मतलब डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में भी लिख सकते हैं टेस्ट सिनारियो, टेस्ट केसेस, या फिर हम डायरेक्टली लोकल सिस्टम में, हमको एक टेम्पलेट मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, ऑटोमेटिक टेम्पलेट रहेगा वो, उस उसमें एडिट हाँ हाँ, उसमें आपको लिखना है और एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको अपलोड करना है। अपलोड करना, फिर ओके। अपलोड होने के बाद वो
या फिर सीनियर रिव्यू करेंगे, रिव्यू के बाद अपलोड करो। ओके ओके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले एसटीएलसी प्रोसेस। ये 101 आस्किंग क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, एसटीएलसी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट प्लान क्रिएट होता है, तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे इंटरव्यू में। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द एसटीएलसी प्रोसेस, ओके, व्हाट इज मीन बाय द एसटीएलसी। सो एसटीएलसी इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल वेयर द सॉफ्टवेयर टेस्टर्स आर इन्वॉल्व। Okay, so first of all, the first stage is what? Test planning. So our test list is responsible to create a test plan. So according to, once the test plan is signed up, then according to the test plans we are going to write the test scenarios. Okay, so test scenario documentation, once it is signed off, then according to test scenario we go for the next phase for writing the documentation for the test cases. Once a test case documentation is signed off, then we are going to execute the test cases. Okay, while executing the test cases, if we find any defect, then we check the defect identification. We are going to identify the any defects. Okay, and the if defect is identified, that is a genuine, then we are going to report the defect to the one of the software, and we are using for that one the Jira software for the defect reporting. You can see. Okay, हम उसमें Jira reporting कर दे. Once we are going to report the defect, okay, so then it is assigned to the developer, and we are going to check that defect, okay, whether it is uh, developer has taken or fix or not. So that is what defect trapping we are going to check here. Okay, so this is also the one of the defect trapping. So in the defect tracking we are going to check the developer is doing work on that fix, the defect is going to fix by the developer or not. We are going to checking that one, that is tracking the defect. And once it is done by the developer, then when it is in the done state, we are going to check that defect whether it is resolved or not by re-executing the same test case. That is what retesting. Okay, we check the retesting, and once we are satisfied with this big bug fixing by the developer, then we go for the defect closing. So now the defect is get closed. Okay, whatever the issue we have raised, that is fixed by the developer, and we are satisfied as per the client requirement is work. And then after that we are going to raise the test case. So we are releasing the test case. Okay, then उसको हम बोलेंगे the test case is pass. So these are the entire process which follows in the STLC life cycle, software testing life cycle. Okay, ये हम डेली फॉलो करते हैं. ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. अब एक देखो यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में फंक्शनल टेस्टिंग चेक करते हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, यूजर इंटरफेस मतलब जीयूआई टेस्टिंग. ओके, यूजेबिलिटी मतलब यूजर फ्रेंडली और नॉट, कीबोर्ड माउस वगैरह वगैरह है ना, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह जो भी है. ठीक है, सो वेब एप्लीकेशन में हम फंक्शनलिटी चेक करते हैं, यूजेबिलिटी भी चेक करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी चेक करते हैं, कंपेटिबल है कि नहीं वेरियस ब्राउजर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो भी चेक करते हैं, सिक्योरिटी लेवल भी चेक करते हैं. ओके, बेसिक सिक्योरिटी, यूजर नेम पासवर्ड, बैक और फॉरवर्ड बटन बटन पे क्लिक करके विजिबिलिटी ऑफ द पासवर्ड ये भी चेक करते हैं, परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं, लॉग फाइल्स जो भी हम एप्लीकेशन रन करते हैं उसमें लॉग्स भी जनरेट होते हैं ना, कौन से सेकंड में कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा सेकंड में कौन सा यूजर आया, ये लॉग फाइल है, ये भी हम टेस्ट करते हैं. ओके, दैट्स ऑल दिस प्रोसेस आवर इन्वॉल्व हियर. सो दिस इज व्हाट एसटीएलसी software testing life cycle. So this is very 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 important, huh? So I'm going to show you one document, okay, that I will going to share you, don't worry. So just I'm going to showing you. So okay, 9 बजे मेरी मीटिंग है. ओके, सो जस्ट मैं आपको एक टेस्ट केस बताता हूँ. सो हमको लिखना है टेस्ट सिनारियो, प्रैक्टिस करवाना है. मैं आपको एप्लीकेशन देने वाला हूँ, उसमें से आपको टेस्ट सिनारियो टेस्ट केसेस लिखने हैं. ठीक है, ये देखो ये टेम्पलेट रहेगा ऐसा. सो कंपनी आपको टेम्पलेट देंगे और प्रोजेक्ट का नाम है जैसे एस आई एम. ओके, सो स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एंड टी एस ई स्टैंड फॉर टेस्ट सिनारियो. सो दिस इज टेस्ट सिनारियो आई डी, एंड टेस्ट सिनारियो आई डी 001. एंड आवर टेस्ट सिनारियो इज आई डी कौन सी है, टेस्ट सिनारियो का डिस्क्रिप्शन मतलब नाम है वेरीफाई द लॉग इन फंक्शनलिटी ऑफ एस आई एम, मतलब स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम. ये है हमारी. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट सिनारियो है वो कौन सा है कि वेरीफाई द लॉग इन फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन. तो इसके ऊपर आप बहुत सारे सिनारियो लिख सकते हो, सॉरी टेस्ट केसेस लिख सकते हो.
ये हमारा टेस्ट सिनारियो है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे टेस्ट केसेस आईडी लिख सकते हो। सो ये पहला टेस्ट केस है, ये दूसरा टेस्ट केस है, तीसरा टेस्ट केस है, ओके, एंड सो ऑन टेस्ट केसेस, राइट। सो द टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, सो एंटर द वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये पहला टेस्ट केस है हमारा। व्हाट आर द टेस्ट स्टेप्स, ओके। स्टेप्स क्या रह सकते हैं? सबसे पहले एंटर द वैलिड यूजर नेम, एंटर द वैलिड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। ये हमारे टेस्ट स्टेप्स है। सो प्री कंडीशंस, ओके, समटाइम्स इज अवेलेबल, समटाइम्स इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। लेकिन टेस्ट सिनारियो आईडी, टेस्ट केस आईडी एंड टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन दैट इज मैंडेटरी टू अवेलेबल एंड टेस्ट डेटा इज मैंडेटरी टू अवेलेबल, ओके। एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट आर इम्पॉर्टेंट, ओके। अब देखो ये लिखते समय मैं लिखूंगा मेरे हिसाब से, आप लिखेंगे आपके हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नो कॉपी पेस्ट, तो जैसा आ रहा है वैसा आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा यूज मतलब रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज द थिंग, ठीक है। रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से लिखो, हम मैं अपने हिसाब से लिखो, कि जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे अगर मुझे बोला गया कि मुझे टेस्ट केस लिखो इसके ऊपर, तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट आनी चाहिए पूरी की पूरी। आपको बोलूंगा तो आपका अपने हिसाब से लिखो, तो जरूरी नहीं है कि आपने ऐसा लिखा मैंने ऐसा लिखा ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं, इसका टेंशन मत लिखो और इसका टेंशन मत लो, हाँ। सो द प्री कंडीशन उसके लिए क्या है कि ये टेस्ट केस मुझे एग्जीक्यूट करनी है, एंटर द वैलिड यूजर नेम पासवर्ड। द प्री कंडीशन क्या है कि ओपन द क्रोम ब्राउजर, ओके। सो इंस्टेड ऑफ द क्रोम ब्राउजर यू कैन राइट एनी ब्राउजर, ठीक है। क्लिक ऑन द एंटर बॉटम, ठीक है, एंटर द वैलिड यूआरएल, एप्लीकेशन का यूआरएल लिखा, क्लिक ऑन द एंटर बटन। बटन नहीं है वो बटन है, वो गलती से बॉटम लिख दिया है, ठीक है, इट्स अ बटन, कुछ भी लिख देते लोग, ठीक है। तो देन टेस्ट डेटा, तो टेस्ट डेटा प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सिनर भी यूज होते हैं, ठीक है। सो यूजर नेम इज एडमिन, टेस्ट डेटा है ये ऑलरेडी मिल गया ना हमको। इसके लिए डेवलपर और सीनियर टेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, ओके। ये इस ऑलरेडी मिलता है ना। यस, सो डेवलपर और सीनियर टेस्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग द टेस्ट डेटा। अगर डेवलपर को पता नहीं है और मैं अपने हिसाब से अगर टेस्ट डेटा दे रहा हूँ, तो क्या वर्क करेगा उसमें? तो इसके लिए डेवलपर को तो उसको पहले फंक्शन देना पड़ेगा ना, जो इनपुट देने वाला है। सो सीनियर टेस्टर और डेवलपर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, टेस्ट डेटा में आपको दिया जाएगा, डोंट वरी, टेस्ट डेटा का। देन हमने देखा है कि यूजर नेम एडमिन डालना है और मास्टर पासवर्ड डालना है, ठीक है। पोस्ट कंडीशन, ओके, पोस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब ये एंटर करने के बाद क्या आना चाहिए? सो यूजर शुड एबल टू सी द क्रोम होम पेज, ओके, यूजर शुड एबल टू सी द एसआईएम लॉगिन पेज। ये पोस्ट कंडीशन है, ये प्री कंडीशन है। प्री ये कंडीशन, ओके, दोनों होता सॉरी है सॉरी, प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन। दैट इज नॉट मैंडेटरी, okay, sometimes as a fresher level that can be used, but at the experience level 1 to 3 year that is not mandatory, okay। ये प्री कंडीशन होना चाहिए कि ये टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के लिए मुझे क्या जरूरी है, प्री कंडीशन हमारा ब्राउजर होना चाहिए, ब्राउजर पे यूजर नेम ये जो हमारा यूआरएल है एंटर होने के बाद हमारा वो दिखना चाहिए, है ना। तो ये क्लिक, ये प्री कंडीशन है, ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। पोस्ट कंडीशन ये है कि मुझे मेरा लॉगिन का पेज दिखना चाहिए, ओके। शुड यूजर शुड एबल टू सी द क्रोम होम पेज, जैसे मैं क्रोम पे क्लिक करूंगा तो क्रोम ब्राउजर ओपन होना चाहिए, और मैं क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद मैं एंटर करूंगा यूआरएल, तो यूआरएल होने के बाद वो रिडायरेक्टर होना चाहिए टू द लॉगिन पेज, ओके। प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन दैट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। द मोस्ट मैंडेटरी क्या है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, ओके। टेस्ट सिनारियो, टेस्ट केस, ओके, टेस्ट स्टेप्स, टेस्ट डेटा और एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। तो समटाइम्स प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन नॉट मैंडेटरी, ओके, ये कुछ मैंडेटरी नहीं है। सो एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, तो एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि सक्सेसफुली लॉगिन एंड हमारा होम पेज, एडमिनिस्ट्रेटर का होम पेज दिखना चाहिए। और एक्चुअल रिजल्ट जब हम उसको डाल दिए है यूजर नेम में पासवर्ड, तो हमने चेक किया कि हमारा होम पेज ओपन हो गया, सक्सेसफुली लॉगिन, सो स्टेटस में आएगा पास, ठीक है। अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट बोथ आर डिफरेंट, देन वी कैन से दिस इज फेल, तो यहाँ पे आएगा फेल, दैट्स इट, ओके। तो अगर फेल करेंगे तो हम उसको रेड लाइन में, रेड कलर में दिखाएंगे, ओके। तो ऐसा टेम्पलेट रहेगा, प्री टेम्पलेट रहेगा ऐसे, ठीक है। ये हमने
प्रिपेयर किया और किसने रिव्यू किया डॉक्यूमेंट। तो ऐसे हमको टेस्ट केसेस टेस्ट सिनारियो लिखने हैं और उसको एग्जीक्यूट करने हैं। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। ये अभी हम एग्जिट करें, सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। प्री कंडीशन क्या है हमारा, क्रोम ब्राउज़र ओपन है, कंसिडर करो कि हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। फिर हम उसको यूआरएल डालेंगे, ठीक है, और एंटर के बटन प्रेस करेंगे तो हमारा होम पेज दिखना चाहिए, दिख गया। यूज़र नेम पे एडमिन डालना है हमको। ओके, सो इसको एरेज करो एडमिन। ओके, देन इसमें लिखो कि मास्टर जो भी है, देन क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। ओके, अभी हमने वो लॉगिन इसका ऑप्शन हमने चेक नहीं किया, उसके लिए और टेस्ट केसेस लिखो, हो ना उसमें ऑप्शंस, उसमें टेस्ट केसेस और लिखना है वहाँ पे। हाँ, और एडमिनिस्टर का होम पेज दिख गया, दिख गया तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, ये हो गया खत्म इसका। ठीक है, उसके बाद दूसरे फंक्शनलिटी चेक करते बैठो। ठीक है, उसमें बहुत कुछ है। हाँ, तो इसमें एक जन ने ये एक डॉक्यूमेंट है, दिस इज फॉर वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनलिटी ऑफ सेम। तो इसमें दूसरा टेस्ट केस लिखा है, उसमें दूसरा सिनेरियो लिया है, उसके हिसाब से दूसरा टेस्ट केस लिखा है यहाँ पे। ओके, तो ये जो एक ही सिनेरियो चल रहा है, ये दूसरा सिनेरियो है, तीसरा सिनेरियो है, तो उसके हिसाब से डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं। तो मैं इसको बोलूँगा कि TS_SIM001, दिस इज व्हाट वन फर्स्ट टेस्ट सिनेरियो, TS_ this one, and I am going to cut from everything from here because these are the scenarios are different here. Okay, this is one scenario, the scenario will be the same. Okay, but test cases get will be increased. Okay, TC for the test cases. Okay, then you can write here the different test case. Okay, अब समझ में आ गया। ये बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं सब कुछ चीज़ें। Okay, so now the your task is what? You can write test scenario or go to the mostly asked question. Go to the Amazon website. ओके, और यू कैन टेक एनी वन सिनारियो, एक कोई भी एक सिनारियो लिखो, देखो इसमें से। ओके, कोई भी एक सिनारियो लिखो और एक सिनारियो के ऊपर से आप एटलीस्ट कुछ टेस्ट केसेस डिज़ाइन करने की कोशिश करो, टेस्ट केसेस। ओके, अमेजोन वेबसाइट पे। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम वो अमेजोन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया उससे उनको लेन देन नहीं रहता है, लेकिन उनको क्या चाहिए तो कोई